Good morning, my dear students. How are you all? Children, today we are going to learn something new. As I always tell you, why I do tell you that? Because learning means growing. When we are learning something, new especially, then it means that we are growing. We are not stuck to one place or one thing. That if you have seen that the water, आपने छोटे से तालाब का या कहीं का आपने वाटर देखा है, जो बारिश का पानी अगर जहाँ वो जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आफ्टर सम डे यू हैव सीन कि वो मडी हो जाता है, गंदगी दिखने उसमें आ जाती है, एंड देन उसमें से फोल स्मेल भी आने लगती है, राइट? बट जो वाटर, रनिंग वाटर होता है, लाइक आवर गंगा रिवर, the river is flowing throughout the year, so the water is always fresh. The same happens with us too. अगर हम अपने आप को हमेशा सीखने में बिलीव रखते हैं, we are learning all the time, it means that we are growing. It means that we have kept ourselves fresh. Our mind is fresh. Our mind is not sleeping, right? So always, whenever you get chance to learn something new, you need to be excited and you have to get very alert and attentive that you have got chance to learn something new, right? लर्निंग ही सिखाता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे. अगर लर्निंग नहीं है तो इट मीन्स दैट वी हैव स्टॉप्ड, हम रुक गए हैं. सो रुकना तो कभी नहीं है. जब तक हमें हमारी मंजिल नहीं मिल जाती, टिल द टाइम वी डोंट गेट सक्सेस, you should not stop. No, no, not at all. No, don't stop. क्योंकि जहाँ रुका, इट मीन्स कि आपने अपने आप अपने से ही हार मान ली. तो हार नहीं मानना, रार नहीं ठानना, हम कर दिखाएंगे, तभी तो इंडिया शाइन करेगा. तो चलो, let's then start our today's class. So today in our class, what we are going to learn is page number 88. Today we are going to learn about words. Can you see this? Page number 88. So all of you please open your English grammar book, page number 88, and the lesson is number 20. So today we are going to know about words. अब आप कहेंगे मैम वर्ड्स के बारे में तो हमें पता है, वी नो आई, मी, यू, दे, दिस, दैट, ये, वो, all are words. So I know what is a words. Well, I know that, my dear children, you all know about the words. You know about different words. हम जो बोलते हैं उन words को, एक एक words को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उन सारे वर्ड्स को मिलाकर क्या बन जाता है, इट मेक्स वन कंप्लीट सेंटेंस, राइट? छोटे 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 वर्ड्स को हम जोड़कर एक सेंटेंस में फॉर्म करते हैं, एंड दैट्स हाउ द वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट? But itself, you know, when we combine two words, when we combine two or three or more words, they can also become one word. आपको पता है, दो ऐसे वर्ड्स जो अपने में अलग अलग हों, उनका मीनिंग हो, लेकिन उन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो एक अलग मीनिंग निकल आता है. फॉर एन एग्जाम्पल, बटर, बटर मतलब मक्खन, एंड मिल्क, मिल्क का मीनिंग दूध, राइट? तो एक वर्ड मैंने कहा बटर, एंड द सेकेंड वर्ड आई सेड मिल्क. सो मिल्क मीन्स दूध. नाउ इफ आई कंबाइन दीज टू वर्ड्स, दैट इज बटर मिल्क, तो बटर मिल्क बनकर क्या हो गया, छाछ. यस, बटर मिल्क, राइट? तो ये तो तीसरा ही वर्ड बन गया जिसका मीनिंग बिल्कुल अलग है, ना बटर से उसका मीनिंग रिलेटेड है, ना मिल्क से मीनिंग रिलेटेड है. इट बिकम्स अ थर्ड वर्ड, दैट इज बटर मिल्क. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर कॉल्ड एज compound words. What are they called as? Compound. Compound means to join. When the two words are compounded to each other and they make a new word, is called as
compound words. Okay, so please now open page number 88, and here you can see some compound words. So two words can be joined to make a new word. Let's now learn about these two the words which can make a different word. ठीक है, चलो अब हम देखो. First word is black, काला, and the second word is board, एक board, right? When together this are mixed, then it becomes blackboard, जिसमें आप स्कूल में आपकी मैम लिखती हैं, है ना? So black and board, these are two different words. ब्लैक का मीन्स काला और बोर्ड मीन्स एक ब्राउन कलर का या ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का एक वुडन बोर्ड होता है, राइट? So when together they are joined, they make this makes a third word that is called as blackboard, right? The same way, see the second one, class. Class means आपकी कक्षा, right? And room means कमरा. रूम तो कोई भी रूम हो सकता है ना? बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम, right? So class and room, when they are joined together, they make a classroom. क्लासरूम मीन्स पढ़ने वाली जगह जहाँ बच्चे बैठ के क्लास में पढ़ते हैं, राइट? नाउ सी डस्ट. डस्ट मीन्स धूल एंड बिन. बिन मीन्स डब्बा. सो डस्ट एक अलग वर्ड है, धूल, और बिन का मीन्स डब्बा, वो भी एक अलग वर्ड है. व्हेन वी मिक्स टुगेदर दे बिकम्स डस्ट बिन. धूल कचड़े वाला डब्बा, दैट इज डस्ट बिन. नाउ प्ले मीन्स खेलना एंड ग्राउंड मीन्स जमीन जहाँ आप खेलते हैं, है ना? ग्राउंड पर जाते हैं ना खेलने, मैदान, राइट? सो प्ले एंड ग्राउंड टुगेदर मेक्स अ वर्ड प्लेग्राउंड, खेलने की जगह. प्लेग्राउंड खेलने वाला मैदान, दैट इज कॉल्ड एज प्लेग्राउंड. सेम वे बेड means बिस्तर and room means कमरा. So bed and room becomes bedroom. So we are specifically telling about a room which has a bed and that is bedroom. Bedroom में जहाँ हम सोते हैं, right? Next, jelly प्लस फिश. जेली मीन्स आप सबको खाना अच्छा लगता है, आई नो आप सब खाते होंगे टॉफीज, जेली जो ऐसा थोड़ा सा ग्लिची ग्लिची सा होता है. और आप लोग तो अभी आजकल स्लाइम वाले भी बड़े एपिसोड्स देखते हैं, मुझे पता है सारे बच्चों के बारे में पता है ना? So the slime also looks like jelly, right? So jelly, and when we add one word with it, that is fish, so it becomes jellyfish. So this is a kind of fish which looks like jelly. When you touch it, वो जल जैसा उसमें feel आता है, that is called as jellyfish, right? It is found in the sea, right? Next, head means sir and band means एक बांधने की चीज. बैंड हम जो बांधते हैं, चाहे वो हैंड बैंड हो सकता है, हेयर बैंड हो सकता है, राइट? सो हेड प्लस बैंड बिकम्स हेड बैंड, सर पर बांधने वाला बैंड. मिल्क प्लस शेक. मिल्क मीन्स दूध एंड शेक मीन्स हिलाना. सो मिल्क शेक बिकम्स मिल्क शेक, राइट? मिल्क शेक आप पीते हैं ना, बनाना मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक, राइट? Hand, hand means हाथ, and shake again हिलाना. So hand plus shake becomes handshake, हाथ मिलाना. Cup plus board. So cup means चाय की वाली cup and board means board. So they together makes cupboard. Cupboard means अलमारी, जिसमें आप अपने कपड़े, बुक, शेल्फ्स, बहुत सारी चीजें जो भी रखना चाहें रख सकते हैं. Straw means pipe, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. And berry is a fruit, red color, right? So straw and berry together makes strawberry, which is a third word. जो आपने पिंक कलर की स्ट्रॉबेरीज देखी होंगी, और आप केक्स भी खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज भी खाते हैं. इट्स अ फ्रूट. स्ट्रॉबेरी इज नॉट एन इंडियन फ्रूट. It it is nowadays, but it is available in India, but not of that good quality what it is there out in the other countries, right? So it's a foreign fruit, though it is now available in India, but not of that very good quality, right? So these are some words which are called as
compound words. So now let's do exercise number 1. Join the words shown in the picture to make new word. One has been done for you. See, doll plus house becomes doll house. So can we make the second one? Number B, rain, and there's a bow. So together they makes a word that is rainbow, right? Now let's see number C. ये बहुत interesting होता है, isn't so? Making compound words is a very entertaining and enjoyable thing, because you learn new words also, and it is so exciting thing. Then when we make when we see the pictures and we make two words together, join two words together, and then the third word is prepared. So let's just do it. Sun, and there's a flower, so together makes sunflower. Okay, there's a lady and there is a bird. So what together they make? Lady and bird becomes ladybird. What kind of bird it is? It's a ladybird. Okay, number E is butter. Can you see butter? And there's the bee. So butter and bee. Butterfly. Yes. Because when we match these two words together, when we join the two words together, this is a butter and this is a fly. Bee is also called as fly. So together they make a word that is butterfly. That is the third word. Butterfly बहुत सुंदर दिखती है ना? It has beautiful wings. And I told you also that how the caterpillar gets transformed into a butterfly. You have read it in the chapter, right? The hungry caterpillar, आपने पढ़ा था ना? Now, next number F. Tooth and brush. So together they make a word that is toothbrush. जिससे आप ब्रश करते हैं मॉर्निंग एंड नाइट में सोने से पहले, right? So please do it in your book. Rainbow, sunflower, ladybird, butterfly and toothbrush. Now the next one, page number 89. Exercise number 2. Match the columns. चलो और words बनाते देखो. Can you see there are some words in column A and can you see there are some words in column B? Now by joining these two words, you will make a third word. Okay, so let's see. Snow को हम किससे join करेंगे? Bug, room, pot, brush, fish, ball, man और cake. Snowman. Yes. Star को हम किससे join करेंगे? Bug, room, pot, brush, fish, ball और cake. Star, fish. Yes. जो star जैसी दिखने वाले fish. Foot will get joined with ball. Yes, and they make a word that is football. पैर से खेलने वाला ball. Tea pot. Tea pot, right? जिसमें हम चाय सर्व करते हैं ना, टी डालते हैं. Bath room. Yes, the room where we take bath. Lady bug. The bug, there's a red color small insect which is called as ladybug. Then paint brush, that is becomes paint brush, जिससे हम पेंटिंग कर सकते हैं. Cup cake. Yes, the cake which is of a cup shape, small cake, that is called as cupcake, right? So now you have to learn these compound words very nicely. Okay, I want that everybody has to learn these words by heart, these words, so that whenever you have been asked you can immediately answer. आपको ये words आने चाहिए. ये now you are in class 2. You must know that how to join the two words and you have to make the third word. It is very easy also, and it is at the same time very, very interesting to do it, right? So your today's homework is that you will learn these compound words and try to make some more new words, looking at the surroundings or looking the things at your home that is available. You may practice making some new words, but make sure the word should have a meaning. If you make a word which doesn't have a meaning, will not solve the purpose, right? So please try to make more and more words, because the more you practice, the more you will get better, right?
बिना प्रैक्टिस के तो आज तक कोई भी कुछ भी नहीं कर सका, ठीक है। सो द वन हु प्रैक्टिसेस always always achieves the best. The one who doesn't practice well cannot achieve anything, right? So that's it for today, children, and you have to complete your work in your book, in your grammar book, and the rest of the exercise, that is exercise number um, the 3 and 4, page number 90 and all, this we are going to do in our next class, that is tomorrow. So today we have just done 2 exercises. I have only given 2 exercises so that आप आज का काम आज ही लर्न कर सके, ठीक है। मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं कराया, कल हम बाकी का करेंगे, तब तक आपको आज का लर्न हो जाना चाहिए, ठीक है। So take care of yourself. Have a wonderful day ahead.